Hello guys, good evening. My name is Atala Chopra Jambulkar and welcome back to my channel Invincible SAP ERP Solution. So today in this tutorial we will see about the implementation project and what are the activities we need to be carried out during the implementations of SAP. So before moving forwards, first we need to know what are the types of project in SAP have. So there are four types of project. First is the implementation. Second is support. Third is rollout, and fourth is the upgradation project. तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट यानी क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस है आपका, जो कि नॉन एसएपी इन्वायरमेंट है, तो उसको हम करते हैं एसएपी इन्वायरमेंट में. दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट. दिस इज कॉल्ड एज द इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट. And the implementations focus on the SAP methodology, which is called as the accelerated SAP. And the second is the support project. What is support projects? जो भी हमने अभी implement किया है SAP, तो उसके बाद जो भी issues आता है client को, they need to be support. That is called as the support project. And third is the rollout project. In a rollout project, there are two types of rollout. First is company code rollout, and second is the plant rollout. तो कंपनी कोड रोल आउट क्या होता है? सपोज हमारी कंपनी एक ले लेते हैं केसी इंटरनेशनल लिमिटेड. तो केसी इंडिया want to expand their business in other countries also, and we can say that the other geographical locations, but they want to expand that business on SAP, and this is called as the rollout project. And the second thing is that the प्लांट रोल आउट. तो प्लांट रोल आउट क्या होता है? जैसे हम कोई इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू प्लांट विद इन दैट कंपनी कोड, एंड इट दिस प्लांट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस. सो जो भी हम प्लांट अभी जो इंट्रोड्यूस किया है उसका हमको कमीशनिंग भी करना पड़ेगा, एंड वी नीड इन लॉट ऑफ थिंग्स. देयर लॉट ऑफ इंटीग्रेशंस बिटवीन द वेरियस मॉड्यूल लाइक MMPP, SD, FICO. So these come under the plant rollout. The fourth is the upgradation project. So what is the meaning of upgradations? So you have to upgrade your customer from ECC 5.0 to ECC 6.0. Okay, that is called as the upgradation project. But note that there is one thing is some consultant uh, जो है वो क्या करते हैं, जो ECC टू S/4HANA में अपन जो कन्वर्ट करते हैं, तो उसको भी वो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट ही मानते हैं. तो दिस इज नॉट अ अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट, दिस इज द माइग्रेशन प्रोजेक्ट. व्हाट अपग्रेडेशन मीन्स? अपग्रेडेशंस योर वर्जन टू अ अपडेटेड वर्जन, दैट इज कॉल्ड अपग्रेडेशंस मीन. तो इसी ECC टू S/4HANA जो भी अपग्रेड हो रहा है या जो भी कन्वर्शन हो रहा है, उसे हम कन्वर्शन ऑफ द माइग्रेशन प्रोजेक्ट बोलेंगे. तो क्यों हम कन्वर्शन और माइग्रेशन प्रोजेक्ट बोलेंगे? क्योंकि एज पर हाना में लॉट्स ऑफ इनोवेशन है, लॉट्स ऑफ न्यू कॉन्फ़िगरेशंस है, बहुत सारी चीज़ें ऑब्सोल्यूट हुई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगर न्यू थिंग्स करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी कैन कॉल्ड एज अ कन्वर्शन और माइग्रेशन प्रोजेक्ट. तो आज हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि कोई कंपनी को एसएपी इम्प्लीमेंट करना हो तो क्या क्या एक्टिविटीज़ हमको परफॉर्म करनी पड़ेगी, व्हाट डॉक्यूमेंट्स वी नीड टू प्रिपेयर, एंड एज अ कंसल्टेंट हमारा क्या रोल होगा, व्हाट लेवल ऑफ कंसल्टिंग वी डू, एंड सो एवरीथिंग वी विल डिस्कस टुडे. So first is the
हम रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। तो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंसल्टेंट की क्या होगी? जैसे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होगी एज पर द लेवल ऑफ कंसल्टेंट। ओके। तो जैसे जूनियर कंसल्टेंट है या एसोसिएशन एसोसिएट कंसल्टेंट है, तो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होगी, और जो भी सीनियर कंसल्टेंट है उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होगी। या बीबीबी फेज से उनकी रिक्वायरमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होगी। और एसोसिएट कंसल्टेंट दे स्टार्ट फ्रॉम द रियलाइजेशन फेज, तो उनकी भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेशन में भी दो टाइप के इम्प्लीमेंटेशंस आते हैं। वन इज ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशंस एंड सेकंड इज द ब्राउनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन। ग्रीनफील्ड, सेकंड इज ब्राउनफील्ड। तो व्हाट डज इट ग्रीनफील्ड मीन्स? ग्रीनफील्ड्स, ग्रीनफील्ड्स यानी जो भी फ्रेश है, लाइक फ्रेश इम्प्लीमेंटेशंस हो गए, और स्क्रैच से हम जो भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जो भी न्यू इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उसे हम ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन कहेंगे। तो इसमें अभी एक चीज़ ये हो सकती है कि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, तो इफ इंटरव्यू ने आपको क्वेश्चन किया कि आप आपने इम्प्लीमेंटेशंस किया है क्या, या हैव यू पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, सो यू विल हैव टू आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस। तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर हाँ यस बोल दिया, so second questions they immediately ask you from which phase you have to start the implementations, and third question is the which documents you have prepared. These are the questions at the initial stage for the SAP implementations. So ये क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में ही आपसे पूछे जाएंगे। तो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अ, कौन से क्लाइंट पर आपने इम्प्लीमेंटेशंस किया है, तो इसका जवाब आपको यानी प्रिपेयर कर कर ही रखना पड़ेगा। तो उसके बाद भी नेक्स्ट इमीडिएट क्वेश्चंस वो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा लोकेशंस था, विच लोकेशंस। तो यू नीड टू प्रिपेयर दिस ऑल दिस बेसिक्स थिंग बिफोर यू पुट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट इन योर रिज्यूम। एंड वन मोर थिंग इज दैट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट की जो प्राइस होती है वो ऑलमोस्ट 50 to 70 करोड़ के आसपास जाती है। ठीक है। जो भी बिग इंडस्ट्रीज है, वही एसएपी इम्प्लीमेंट्स अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट उनका रेवेन्यू जो है जो भी फाइनेंशियल का कम से कम उनका 800 करोड़ अबव ये रहना चाहिए, क्योंकि वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज द 10 to 15% एसएपी इम्प्लीमेंट्स करने में ही चला जाएगा। पहले तो यही होता था कि बिग इंडस्ट्रीज ही इम्प्लीमेंट कर पाती थी, बट नाउ द एसएपी हैज provide different type of solution, like there is one come in the market now by designs conquer lots of the things come in the market. So now the small medium enterprises also afford to implement that SAP also. एंड नेक्स्ट थिंग ये है कि एसएपी जो भी रिकमेंड करती है वो एसएप मेटोलॉजी को रिकमेंड करती है। एसएप मेटोलॉजी मीन्स द एक्सेलेरेटेड एसएपी मेटोलॉजी। ठीक है। तो इसमें एसएप मेटोलॉजी में 5 फेजेस होते हैं। एंड क्यों हम ऐसे ऐसे भी मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, बिकॉज द गाइडलाइंस जो भी है ना प्रोवाइड करते हैं एसएपी, उस गाइडलाइंस में ये चीज होती है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट एसएपी, एंड द व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू बी क्रिएट्स एंड व्हाट एक्टिविटीज यू नीड टू बी परफॉर्म इन दिस एसएप मेथोडोलॉजी। ओके। एंड एसएप मेथोडोलॉजी के 5 फेसेस होते हैं। फर्स्ट फेस इज प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, and second is the business blueprint,
business blueprint, and third one is the realization phase. Fourth, final preparation, and fifth is the go live and hypercare support. Here support. तो आज के सेशन में हम प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस क्या होता है, क्या क्या सब चीज़ें हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि एसएपी इम्प्लीमेंटेशंस अप्रोच बिजनेस के लिए कैसे होता है। ठीक है। सो हियर इज द बिजनेस टीम से। तो बिजनेस टीम हम अभी केसी इंटरनेशनल लिमिटेड को लेते हैं। के सी इंटरनेशनल लिमिटेड। और केसी इंटरनेशनल लिमिटेड के दो प्लांट्स हैं। एक केसी स्टील प्लांट, and second is the KC cement plant. तो भी केसी इंटरनेशनल में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉन एसएपी सिस्टम यूज हो रहा है, जैसे ओरेकल या कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी लेगेसी सिस्टम्स जो कि हमें अभी कन्वर्ट करना है, सो हम ओरेकल लेते हैं। तो भी बिजनेस को एसएपी में मूव होना है। ठीक है। दे वांट टू कन्वर्ट दैट ओरेकल टू एसएपी सिस्टम। तो अभी बिजनेस टीम का क्या अप्रोच रहेगा। तो बिजनेस टीम अभी क्या करेगी, जो भी बिजनेस टीम है केसी इंटरनेशनल लिमिटेड, तो ये लाइसेंस बाय करेगी एसएपी से। तो उनको पहले ये देखना पड़ेगा कि उनके पास कंपनी में कितने यूजर काम करते हैं। जैसे 1000 ऑफ वर्कर काम कर रहे होंगे, पर 1000 वर्कर को सभी को तो एसएपी का आईडीज वगैरह जरूरी नहीं होता। जो भी लाइक एंड यूजर सिर्फ उन्हीं के लिए दे दे वांट टू फर्स्ट एनालिसिस की किस किस को रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी 1000 वर्कर है, 1000 वर्कर में से 100 एम्प्लॉयज़ को ही ज़रूरत है एसएपी आईडी का। तो 100 लाइसेंस उनको एसएपी की तरफ से परचेस करने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे 100 लाइसेंस परचेस करने के बाद देर आर डिफरेंट कंसल्टिंग कंपनी। ओके। देर आर डिफरेंट कंसल्टिंग कंपनी इन मार्केट। फर्स्ट इज IBM, Accenture, and TCS. They are the implementation partner. तो अभी जो ये तीन कंपनी है, जो भी कंसल्टिंग कंपनी है, वो ये सभी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है। तो ये तीनों कंपनी के जो भी बीडीएम है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट टीम जो भी है, वो केसी इंटरनेशनल लिमिटेड को अप्रोच करेगी कि दे टेलिंग अबाउट द कॉम्पिटिटर आल्सो, एंड all the required things they tell, जो भी है, जो भी रिक्वायर्स डिटेल्स है, वो केस इंटरनेशनल को बताएगी कि हम इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है। ये सब चीज़ें इसके पहले जैसे अभी
केमिकल या फार्मास्यूटिकल कंपनी पकड़ लो, जैसे आईबीएम बोल सकती है कि अभी हमने रिसेंटली 3 इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट किए, नाम बताएंगे, दे अप्रोच करेंगे केसी इंटरनेशनल लिमिटेड को कि हम ये इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। और सेम एसेंचर भी पिचेस का पिच करेगी, एंड सेम टीसीएस भी पिच करेगी। सो अभी स्टील कंपनी है तो आईबीएम बोलेगी लास्ट लास्ट ईयर हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए। सो एंड ये सब चीज़ें अप्रोच करने के बाद जो भी मीडियम टीम है वो इमिजिएटली कोटेशंस नहीं रेस करेगी, क्योंकि बिजनेस इतना बड़ा है कि उन्हें पता ही नहीं होगा कि क्या क्या चीज़ें और कितना अमाउंट्स कोटेशंस में डालना है, क्या प्रोसेस है, ये सब चीज़ें इमिजिएटली नहीं होगी तो वो कोटेशंस रेस नहीं करेगी। नेक्स्ट थिंग इज कि कोटेशंस कब भेजेंगे। सो देर इज अ प्री सेल्स टीम, एंड प्री सेल्स टीम को हम भेजेंगे केसी इंटरनेशनल लिमिटेड के बाद, एंड द प्री सेल्स टीम अंडरस्टैंड ऑल द बिजनेस एंड all the business process. Later, understanding all the business process, they draft one complete quotations. Then उसके बाद quotations draft करेंगे, कितना बजट है, ये सब चीज़ें वो प्रीसेट टीम वहाँ जाके करेंगे। तो यहाँ तक के समझ में आया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस क्या है। तो प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस में क्या होता है जनरली, प्रोजेक्ट मैनेजर ही इन्वॉल्व होता है, देर इज नो अदर कंसल्टेंट है इन्वॉल्व इन दिस फेज, बिकॉज द प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस इज रिक्वायर्ड द ओनली project managers from our side, and from the business side also they come VP, second VP from finance, with here VP from IT, and third project manager, and fourth is technical head. And from our side, one project manager or senior consultant. Generally, this thing not happen, only a project manager discuss this all this thing in the project preparation. Okay. Preparations क्या है? Project preparation is the what we can say that it is the list of activities which can be carried out by the business to make the project successful. Okay. तो इसमें क्या है, जो भी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ है वो कैरिड आउट होती है बिजनेस की तरफ से टू मेक द प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। तो इसमें क्या होता है, वन प्रोजेक्ट चार्टर होता है जिसमें कि जो कि एक डॉक्यूमेंट्स होता है विच इज़ द आउटकम ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस। ओके। सो हम प्रोजेक्ट चार्टर देखेंगे अभी क्या है फिलिप। तो प्रोजेक्ट चार्टर में काफ़ी चीज़ें मेंशन होती है, जैसे कि मैंने बोला कि हमारे साइड से जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर, उनके साइड से वीपी आईटी, वीपी फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द टेक्निकल टीम वाज देयर। दे नीड टू डिस्कस ऑल द रिक्वायर्ड थिंक कि प्रोजेक्ट का नाम क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट विजन मिशन क्या है, और प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, पार्टनर स्कोप ऑफ वर्क क्या है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या है। दे ऑल नीड टू डिस्कस इन द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन स्टेज, कब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, कब खत्म होगा, कितने रिसोर्स लगेंगे, काफ़ी चीज़ें हियर दोनों साइड्स एक होती है। सो इन द प्रोजेक्ट चार्ट what are the activities which can be carried out to clear this thing, project charter। तो डिपेंड अपॉन द बिजनेस दे कोई मिनिमम एक्टिविटीज़ रखता है या कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ रखता है। सो जो अभी मैंने इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट किया है उसमें हमने काफ़ी
कम चीज़ें हमने मेंशंस की थी. सो फर्स्ट इज द प्रोजेक्ट नेम ऑफ प्रोजेक्ट नेम क्या होना चाहिए, एंड सेकंड इज द प्रोजेक्ट विजन एंड मिशन, and third is the project scope, fourth is the project implementation strategy, testing standard and strategy. So what are the training methodologies? Project delivery, and it is the sign of charter. The last is the very important sign off. I will explain to you. सो अभी जो है फर्स्ट प्रोजेक्ट नेम, तो नेम ऑफ द प्रोजेक्ट आपका क्या होना चाहिए? इट इज जनरली फॉर द आइडेंटिफिकेशंस. So you can put the difference name, or the you can put the name of that project like uh, Pragati, or any other name which you want to for the identifications purpose. So I generally use the project name is Pragati. And what is project vision and mission? The vision is your goal, and mission is how to achieve that goal. Okay, and third is the project scope. So, what is project scope? This is another one main important question which is asked by the interviewer. So, project scope is nothing but which environment you are working. So, you are working on the ECC 6.0 implementations, or with now the S/4HANA implementation, which process you are working on, which environments. So this is the main important question which can be asked by the interviewer. And next is the project implementation strategy. So like I was mentioned earlier, is one is TCS, Accenture, and so both three company use different strategy. So IBM use SNL, and Accenture use Victory asset methodology, and TCS use Success. I think Success asset methodology. Success asset methodology. Okay. So what implementation strategies they using? So if I mentioned that the three names earlier, so the quotations is cracked by the TCS. Then the strategy will be used by the TCS is the success SAP methodology. Okay, which is success SAP. Okay. Then the next thing is that the testing standard and strategy. There are what are the testing standard? There is first is the unit testing, and second is the SIT system integrations testing, and third is the unit acceptance testing.
These are the testing which are mandatory, and we need to do some. We need to create some strategies for to doing this testing, unit testing in the development server. Then in the quality server, we need to do and what strategy we have to make for the SIT and the UAT. These are the things which we can do in the testing standard and strategy. And sixth is the ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। अब ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में क्या होता है, जैसे कि अभी हंड्रेड्स एम्प्लॉय है, उनको जो आईडी चाहिए था वो हमने दिया, ठीक है। तो बात ये है कि अभी 100 लोगों को तो हम ट्रेनिंग सभी लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमने तो हमें की यूज़र को देना पड़ेगा ट्रेनिंग, ताकि वो की यूज़र हम बाकी 100 लोगों को ट्रेनिंग दे। तो वी वी कैन कॉल्ड एज अ टैट टैट मेथोडोलॉजी। What is TAT methodology? So TAT methodology is nothing but the trainer, trainer. What he is do first, we give the training to that trainer, which means that key user. So this key user will give provide training to that remaining end user. Okay. सो अभी नेक्स्ट पार्ट ये है कि प्रोजेक्ट डिलीवरी। अभी प्रोजेक्ट डिलीवरी का फेस डिसाइड करना है। तो प्रोजेक्ट डिलीवरी में काफ़ी टाइम लगता है। कम से कम एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने में आपको पता होगा 1 से 1.5 लाख या प्लस उससे ऊपर भी चले जाता है। पर नॉर्मली 1 ईयर्स तो मिनिमम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस का। तो फर्स्ट इज प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस में काफ़ी 1-2 मंथ्स चला जाएगा, और बीबीबी में काफ़ी समय चला जाता है, बिकॉज वी नीड टू डू द लॉट्स ऑफ गैदर्स द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द बिजनेस। तो काफ़ी समय चले जाता है, क्योंकि एंड यूज़र फ्री नहीं रहते, क्योंकि वो भी काम करते रहते हैं। तो हमें जो भी रिक्वायरमेंट है उनके पास से लेनी होती है, तो काफ़ी टाइम चले जाता है। और थर्ड इज 3 to 4 months goes on the business blueprint phase, and third is the realization phase। realizations में भी 3 months जाता है। तो ये सब चीज़ें हम, एंड फोर्थ इज द एंड फाइव इज द गो लाइव। सो ये सब चीज़ें हम कितना टाइम पीरियड लगेगा, ये सब चीज़ें हम पूरा प्रोजेक्ट डिलीवरी में मेंशन कर दें। So at last, sign off charter. This is the main part. If all जो भी डिटेल्स हमने फिल किया है, तो लास्ट में हमें साइन ऑफ चार्टर, लाइक हमें बिजनेस के साइड से हमें कि ऑल दिस थिंग्स जो भी है हम ये मेंशन किए हैं, आप प्लीज चेक करके साइन कीजिए। उनकी तरफ से भी साइन किया जाता है, और हमारी तरफ से भी। इट इज नथिंग बट द स्टैम्प पेपर, वी कैन कॉल्ड एज लाइक एग्रीमेंट वी हैव टू डन विद द कस्टमर। स्टैम्प पेपर बोल सकते हैं हम एक तरफ से साइन ऑफ चार्टर को। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस की स्टेप, जो भी हमने एक्टिविटीज करना था वो पूरी हो चुकी है। सो इसमें काफ़ी चीज़ें और ऐड ऑन हो सकती है पर द बिजनेस, और नई भी हो सकती है। कोई मिनिमम स्टेप रखता है, कोई मैक्सिमम स्टेप रखता है। पर अभी जनरली एस/4HANA इम्प्लीमेंटेशंस होता है। ये जो एसएप मेथोडोलॉजी है वो इसी से इम्प्लीमेंटेशंस करने वक्त यूज़ होती थी। Now, in S/4HANA, we use the activate methodology. S/4HANA use activate methodology. So, what is mean activate methodology? It's simple. It's work on the waterfall model. What does it mean waterfall model? It means that जब भी आपकी पानी की बूंदे गिरेगी, वो रिटर्न तो जाएगी नहीं। तो उसी समय कि कस्टमर की तरफ से कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी, तो एक बार अ, हमने मेंशन कर दिया तो वो चेंज नहीं होगा, वो डायरेक्टली फ्रीज हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड अ वाटरफॉल मॉडल। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि
अभी एक्टिवेट मेट्रोलॉजी हम यूज़ करते हैं एस4 हाना में, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा है जो कि इसी से में हम लाइक करते थे। तो इसमें क्या होता है ना, जो भी हम प्रोजेक्ट्स अभी किए हैं, यानी लाइक जैसे P2P, यानी कोई भी एक प्रोजेक्ट एमएम के साइड से हमने किया है, तो हम ब्रेक कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को, और वो ब्रेक करके हम इंडिविजुअली वो प्रोजेक्ट का टेस्ट करके गोलाई कर सकते हैं। जब हम एस/4HANA के लिए लाइसेंस परचेज करते हैं, ठीक है, तब दैट टाइम द एसएपी गिव्स द क्लाउड ट्रेल्स। सो व्हाट क्लाउड ट्रेल्स इज मीन, जो भी हमने प्रोजेक्ट्स किए इंडिविजुअली, तो वो हम टेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम क्लाइंट्स को टेस्ट करके दिखाए तभी इट इज ओके और नॉट, देन वी मूव फॉरवर्ड। These are the benefits in the S/4HANA, because the client customers ने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है, 50 या 70 करोड़ इज नॉट अ जो, यानी उनको भी चीज़ें अभी लाइव चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या क्या हम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उन्हें भी पता चाहिए कि ठीक है। तो इसी में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, इसी में जैसे एक बार प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो गया, लाइक 1 से 1.5 साल के बाद तभी उनको चीज़ें सब देखने के लिए मिल जाती थी। तो ये चीज़ें अभी एस/4HANA में नहीं है, काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है, जो कि हम इसी में लाइक कर सकते हैं एक्टिवेट मेट्रोलॉजी पे। वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी, वो जो भी आपने प्रोजेक्ट किया दैट्स आप एसएपी क्लाउड ट्रेल्स पे आप टेस्ट कर लिए, क्लाइंट को दिखा दीजिए, और आगे मूव करिए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेस। अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट क्लास में हम बिजनेस ब्लूप्रिंट देखेंगे, नेक्स्ट फेस देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस इन योर फ्रेंड सर्कल, बिकॉज उन्हें भी या यूज़ में आ जाएगा, यूज़फुल हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।